All right, so today we'll be starting off quickly with this food production, another topic of here at Excel IGCSE biology. And in food production, we are going to talk about different farms, factors, and how is this main industry, food, working in the fields of agriculture and fish farming and livestock farming, and what are the effects, consequences, and all of these. If we start with crop plants are grown in glass houses and in polythene tunnels. Have you ever heard of these two terms before? जी. ठीक है. Let's say if we talk about something that if a plant is given unlimited light, carbon dioxide, and water, and it is warmed at a certain temperature as well, the only thing limiting the rate at which it can photosynthesize is its own ability to absorb these material and make them react. However, most of the plants do not have unlimited supplies of these things, so their rate of photosynthesis is limited by whatever factor is the lowest at that time. We call it the limiting factor. अब कोई भी limiting factor, what is a limiting factor? How would you explain me that? Something that's holding its full potential back. कोई चीज जो कम है अमाउंट में, a factor that जी. is not letting the reaction go to its full potential, right? उसको slow down कर रहा है, जी. कोई भी एक वो limiting होल्ड बैक करती. exactly. Now sometimes temperature can be limiting as well. If we talk about rate of photosynthesis, light intensity can be limiting as well, and carbon dioxide concentration can be limiting as well. अगर हम टेम्परेचर की बात करें, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस एज द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. However, as the reaction is controlled by enzymes, this trend only continues up to a certain temperature beyond which the enzymes begin to denature and the rate of reaction starts to decrease. अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा और ये सारा आपके पास क्या है, एंजाइम्स कंट्रोल कर रहा है. हाउएवर ये रिएक्शन ना एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं इसको, और ये एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही जाएगा. फिर एक लिमिट आएगी कि ये सारे डीनेचर भी होने लग जाएंगे. लाइट इंटेंसिटी ये का भी बहुत टेम्परेचर तकरीबन क्या होती है? क्या चीज. वो टेम्परेचर क्या होती है तब उसके बाद एंजाइम नेचर होते हैं? हाँ, उसके बाद आपके पास वो एक, देखो इस तरह आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बट थोड़ा और बढ़ाओगे ना, तो आपकी लाइन हाँ, तो ऐसे. डी नेचर हो गया, लेकिन वो टेम्परेचर वो डी नेचर होंगे तकरीबन? सबका अपना अपना होता है. इट रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्रीज टू 40 डिग्रीज, हर प्लांट का अपना हो सकता है. ओके, प्लॉट पर डिपेंड करता है. प्लांट पे डिपेंड करता है. ओके. लाइट इंटेंसिटी का भी सिंपल है. The more the light a plant receives, the faster would be the rate of photosynthesis, and this trend will also continue until some other factor required for photosynthesis prevents the rate from increasing further because it is now in short supply as well. अब बाकी कांस्टेंट होंगे. अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ा लोगे, लेकिन ये दोनों का बढ़ाना भी एक वक्त पे इट्स नॉट गोना अफेक्ट एनी मोर. व्हाई? क्योंकि पीछे लाइट इंटेंसिटी इज द लिमिटिंग नाउ. बेशक आप इन दोनों को बढ़ाओ, अब लिमिटिंग कौन है? लाइट इंटेंसिटी ये इज. बॉटलनेक बन जाता है लाइट इंटेंसिटी, नहीं? एग्जैक्टली, बिल्कुल. फिर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. आपके पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड पे वाटर बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन. ठीक है. दिस मीन्स दैट मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रेजेंट, द फास्टर द रिएक्शन कैन अकर, एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू until some other factor required for photosynthesis prevents the rate from increasing further because it is now in short supply as well. The knowledge about limiting factors and how they affect the rate of photosynthesis can be used by farmers to improve crop yields. Growing crops outside does not allow farmers to control any of these factors. अब आप खुले में फील्ड्स में, मैदानों में अगर आप ये क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो, कैन यू कंट्रोल लाइट इंटेंसिटी? नहीं. सूरज है तो है. कैन यू कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर? नहीं. बट यू कैन कंट्रोल देम इन अ ग्लास हाउस और पॉलीथीन टनल्स. ये जो तीनों फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, they can be controlled in these two environments because they provide an enclosed environment in which farmers can to some extent control the climate inside and also increase their crop yields. In a glass house, several conditions can be manipulated to increase the rate of photosynthesis, including artificial heating. आप एंजाइम्स को कंट्रोल कर सकते हो ताकि डीनेचर ना हो. आप आर्टिफिशियल लाइटिंग खुद कंट्रोल कर सकते हो. आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड को, और रेगुलर वाटरिंग भी आप खुद से कर सकते हो. ये नहीं कि जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए बाहर. अब हर चीज इट इज ऑल इन योर कंट्रोल नाउ. सो व्हेन ये कंसिडर. आर्टिफिशियल लाइटिंग, ये इन टर्म्स ऑफ मतलब लैंप्स की यूज होते हैं, स्पेशल यस, लैंप्स? स्पेशल लैंप्स होते हैं would the जो ऐसी would इल्यूमिनेशन these प्रोवाइड lamps prove करते हैं. as effective as sunlight या नहीं? यूवी रेज. लेकिन वो
जितना इफेक्टिव हो सूरज उतना इफेक्टिव होगा? इतना ही होता है, स्पेशल लैंप्स नहीं होते हैं। होता है? नहीं ओके। उतना ही इफेक्टिव होता है, एंड दे आर स्पेशल लैंप्स दैट आर जस्ट लाइक द सनलाइट। ओके। अब glass houses or polythene tunnels में you can control anything. When considering the use of glass houses and manipulating conditions like this, farmers need to balance the extra cost of providing heating, lighting, and carbon dioxide against the increased income. In tropical countries where temperatures are much hotter, glass houses may still be used to control other conditions. However, they may need to be ventilated to release hot air and avoid temperatures rising too high as well, which would cause denaturation of enzymes controlling the photosynthesis reaction. Polythene tunnels are plastic tunnels जो crops को cover करते हैं. They can protect crops grown outside from the effects of weather, including excessive wind, ज़रूरत से ज़्यादा rain, a lot of extreme temperatures, and they can also increase the temperature slightly inside the tunnel as well. और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पॉलिथीन टनल्स जो प्लास्टिक के बने होते दे कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पेस्ट्स दैट कैन डैमेज प्लांट्स और डिजीजेस दैट कैन एक्चुअली किल द प्लांट्स एज वेल। तो उनको ये आने नहीं देते हैं, बिकॉज वेन एवर यू आर growing these crop plants, what should be your main target? Increase the yield. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज द फूड सप्लाई सब्सटेंशियली इन टू की वेज, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड एज वेल। अब आपकी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैज हेल्प दिस डिमांड एज वेल। Fertilizers increase the amount of key nutrients in the soil for crop plants, for example, nitrogen, phosphorus, potassium, nitrates, ये जितनी quantities, magnesium, ये जो इतनी सारी nutrients आपके plants को चाहिए होती हैं, these are now provided by fertilizers, meaning that they can now grow larger in a more healthy way, which can increase the yield as well. Pesticides is also a part of that modern technology that has helped us increase the food supply to the population as well. These chemicals kill off unwanted insects and weed species, meaning that there is less damage done to crop plants by insects, as well as reducing competition from other plant species, which increases the yield as well. Plants require a range of mineral ions in order to grow well. As the crop plants take up these mineral ions from the soil, the mineral ions need to be replaced if these crops are grown repeatedly in the same field as well. क्योंकि अब आप एक सॉइल पे तो डिपेंड नहीं कर सकते पूरी लाइफ के लिए, उस सॉइल के अंदर जो रूट्स ने सारी यूज कर चुकी होती है, दैट सॉइल इज फर्टाइल, नॉट ऑलवेज, इट इज फर्टाइल फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर ये वाला क्रॉप ग्रो हो गया, इसको उतारोगे, अब दूसरा प्लांट करोगे, क्या उसको भी उस सॉइल में से मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स? नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज द प्रीवियस प्लांट्स हैव ऑलरेडी यूज्ड अप ऑल ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो अब हमें क्या डालने पड़ेंगे? फर्टिलाइजर्स। गॉट इट? जी। Fertilizers are then used to replace these mineral ions because all of the mineral ions in the soil were used by the previous population of crops. So these fertilizers can make the crops grow faster and bigger so that the yields are increased as well. Now, these fertilizers can be in the form of organic fertilizers or chemical fertilizers as well. Organic fertilizers are commonly used by farmers क्योंकि ये cheap है और available होते हैं. For example, manure, animal manure और compost material होता है. But chemical fertilizers are expensive, जैसे कि sprays available होते हैं. But fertilizers का ये याद रखो, they are providing what? Nitrogen, phosphorus and potassium in huge amounts, which are now very, very less in the soil. And why do you need NPK? NPK क्यों चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम? Because nitrogen is absorbed in the form of nitrates and they are needed to make amino acids, which are the building blocks of protein. And if there is no nitrogen, the lack of nitrogen is going to cause weak growth and yellowing of leaves of plants as well. Why do you need phosphorus? Because it is absorbed in the form of phosphates needed to make the DNA and cell membranes. And this lack of phosphorus can cause poor root growth and discoloring of leaves as well. Potassium is बहुत important है, because this potassium is only going to allow all the enzymic reactions to take place to produce ATP. पोटेशियम हेल्प करेगा कि एटीपी प्लांट प्रोड्यूस हो। अगर एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? आपके पास प्लांट्स रात को रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे एज वेल। ठीक है। लैक ऑफ पोटेशियम कैन ऑल्सो कॉज पुअर ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एज वेल एज ब्राउन स्पॉट्स ऑन द लीव्स एज वेल। ये आपके हो गए फर्टिलाइजर्स। पेस्ट कंट्रोल के लिए हम डालते हैं पेस्टिसाइड्स। वाई? क्योंकि वी वांट टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड्स। पेस्ट सच एज इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स कैन डैमेज द क्रॉप्स बाय ईटिंग देम। फॉर एग्जाम्पल वीड्स हैं, वीड्स तो आउट compete कर देते हैं क्रॉप प्लांट्स को, ये खाते नहीं है प्लांट्स को,
पेस्ट तो खा जाते हैं प्लांट्स को, वीड क्या करते हैं, कैन यू टेल मी? सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेते एग्जैक्टली वीड ना प्लांट को खाएगा नहीं, उसको कुछ नहीं कहेगा, करेगा क्या, उसके सनलाइट ब्लॉक कर देगा या उसके रूट्स ऐसे फैल जाएंगे इर्द गिर्द कि इट इज हैं, गोइंग टू कंपटीशन बनेगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा। वीड्स डू नॉट ईट और डैमेज द क्रॉप्स, रिमेंबर दैट, डायरेक्टली नहीं करते, इनडायरेक्टली करते जी। हैं। पेस्ट्स एल्गे आर की दोस तरह इंसेक्ट्स ऐसा ही है। दैट डैमेज द क्रॉप्स डायरेक्टली, पेस्ट डायरेक्टली डैमेज करते हैं, वीड्स डू नॉट, वीड्स सिर्फ कंपटीशन दे देते हैं। फंजाई कैन इन्फेक्ट क्रॉप प्लांट्स एज वेल, स्प्रेडिंग डिजीजेस फॉर एग्जांपल। फिर वायरसेस भी होते हैं डिफरेंट, जैसे कि टोबैगो मोज़ैक वायरस, टीएमवी। उन सब को मारने के लिए यू हैव टू यूज दीज पेस्टिसाइड्स एज वेल। अब वो केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स के अंदर आपके पास तीन आते हैं: इंसेक्टिसाइड्स टू किल इंसेक्ट पेस्ट्स, herbicides to kill plant pests, fungicides to kill fungi pests. But again, if you're talking about pesticides, chemical pesticides, उनके एडवांटेज हैं कि दे आर इजीली अवेलेबल, चीप हैं, उनका इमीडिएट इफेक्ट होता है और वो पूरी पूरी पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट को भी किल कर देते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या है कि ऑर्गेनिजम्स आर्ट मेंट टू किल, आप नेचर के अगेंस्ट भी जा रहे हो और आपको चाहिए कि आप उनके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप करो। वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप बजाय आप कोविड को मारना शुरू कर दो, आपने लोगों में रेजिस्टेंस डेवलप की ना इम्यूनिटी के थ्रू। यही आपको प्लांट्स के साथ भी करना चाहिए। प्लस नॉन स्पेसिफिक केमिकल्स कभी कभार बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को भी किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीज, हनी बीज भी अफेक्ट हो जाती है, जबकि वो तो पॉलिनेटर है क्रॉप्स की। पॉलिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट? स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट्स, एग्जैक्टली, मतलब पोलिनेशन के साथ वो सीड्स भी रिप्रोडक्शन भी स्प्रेड तो होते होती हैं। है प्लांट्स की, ए सेक्शन। जी। दे कैन बी persistent chemicals एज वेल, और कुछ आपकी फूड चेन्स को भी हार्म कर सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन, व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? बायो एक्यूमुलेशन मतलब वो डिस्टर्ब होता है फूड चेन। एग्जैक्टली, प्रोड्यूसर्स पे आपने पेस्टिसाइड्स यूज किए थे, अब थोड़े बहुत केमिकल तो इसके अंदर हैं। प्रोड्यूसर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स विच हैव द सेम केमिकल्स, सेकेंडरी कंज्यूमर वुड हैव द सेम केमिकल्स एंड इट कैन अफेक्ट यू एज वेल अगर आप सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हो। फोर्थ डिसएडवांटेज ये होता है दैट दे नीड टू बी रिपीटेडली अप्लाइड अगैन एंड अगैन। बट केमिकल कंट्रोल के बजाय वी हैव एन ऑल्टरनेटिव विच इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल। कैन यू टेल मी व्हाट इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल? मतलब कोई इंसेक्ट्स के साथ वो प्रेडेटर आप यूज कर सकते हैं, मतलब इंसेक्ट्स को किल करने में। गुड। फॉर एग्जाम्पल लेडी बर्ड्स, लेडी बर्ड्स को आप यूज कर सकते हो टू ईट एफिड्स, बजाय आप एफिड को केमिकल से मारो, ये छोड़ दो उन पे, बायोलॉजिकल कंट्रोल है ना। A species introduced specifically to prey on the pest species, for example, parasitic wasps can control whitefly in glasshouse tomato crops as they are based on predator prey cycle and they do not completely remove a pest but keep it at lower levels. एडवांटेजेस क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल के? नो पॉल्यूशन, नेचुरल मेथड है, नो रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक स्पीशीज को टारगेट कर सकते, लॉन्ग लास्टिंग भी है और बार बार अप्लाई नहीं करना, लेडीबग्स को रोज नहीं फेंकना। डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपके अदर ऑर्गेनिज्म को भी खा सकती है लेडी बर्ड, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लेती है, इमीडिएट इफेक्ट नहीं देगी जैसे केमिकल उसी वक्त मार देता है। थोड़ा आप छोड़ो, कुछ दिन छोड़ो, फिर आके देखो कि मरे भी हैं या नहीं। इट कैन नॉट किल द एंटायर पॉपुलेशन, इट ऑल्सो मे नॉट अडेप्ट टू द एनवायरमेंट। एफिड्स वहां अडॉप्ट कर रहे थे लेकिन आपने जो लेडी बर्ड्स को भेजा था मे बी दे आर नॉट एबल टू लिव और सर्वाइव इन दैट पॉपुलेशन। प्लस कभी कभार वो खुद भी पेस्ट बन सकता है और आप ही के खिलाफ भी रिएक्ट कर सकता है। गॉट इट? जी। गुड। So can you tell me how are fertilizers and pesticides used to increase crop yield? Fertilizer used to give minerals, necessary minerals to good growth of plants, they increase crop yields. And Mhm. pesticides are used to decrease the number of crops being eaten up by plants or ruined by plants, eaten. Good. Put simply, fertilizer is plant food. It can be natural or deliberately put into soil by people. Fertilizer contains different kinds of nutrients that are essential for plants to grow. Ever since people started farming plants for food, thousands of years ago, they've had to manage the quality of soil on the land. When soil contains lots of essential nutrients, crop plants can grow fast and produce large yields. But when we harvest crops and then take them away and eat them, we take the nutrients too. So after years of growing plants, the soil can't support crops very well,
unless we replace the nutrients using fertilizer. Most fertilizers contain nitrogen and phosphorus, though some contain other useful elements like potassium. They can be organic or inorganic. Organic fertilizer contains carbon, and an example of an organic fertilizer is manure. Inorganic fertilizers can take many forms, such as ammonium phosphate, which can be in a crystal or a powdered form. Since we learned how to make fertilizers efficiently on a large scale, we've been able to grow many more crops, and therefore the human population has risen dramatically. There can be problems with putting too much fertilizer into a natural system, and some of the problems with fertilizers are explained in other videos. So, a fertilizer is a plant food that contains nutrients such as nitrogen and phosphorus, and we use it to grow our crops bigger and faster so they produce more food. Okay. Now, how is yeast used in food production? Another very important topic. Microorganisms can be harmful as well. हमें पता है वो disease cause करते हैं, but microorganisms can also be used by humans to produce foods and other useful substances as well. For example, the production of bread using yeast is a very, very important example. Yeast is a single cell fungus that can carry out both aerobic and anaerobic respiration. A yeast cell has a nucleus, cell membrane, ribosomes, cell wall made up of chitin, cytoplasm, and a mitochondrion. When yeast carries out anaerobic respiration, it produces ethanol and carbon dioxide. What is the meaning of anaerobic respiration? Without air, ये बनेगा fermentation और Without oxygen. ठीक है, ऑक्सीजन के जी बगैर. और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये ब्रेड मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है. Yeast will respire anaerobically if it has access to plenty of sugar, even if oxygen is available or not available. This is taken advantage in bread making, where the yeast is mixed with flour and water, and the yeast produces these enzymes that can break down the starch. अब ये starch है वो sugar. इस starch को break down करेंगे, releasing sugars for anaerobic respiration. So the carbon dioxide produced by the yeast during anaerobic respiration is trapped in small air pockets in the dough. ये आपके पास अगर dough है ना, वो छोटी छोटी pockets के अंदर air trapped होती है, which makes it fluffy as well. You bake it in a hot oven to make a bread, और वो volume बढ़ा देती है आपकी bread का. During baking, any ethanol produced by the yeast as a waste product is evaporated in the heat. This is why bread doesn't contain any alcohol, because the yeast is killed by high temperatures using during baking. This ensures there is no further respiration by the yeast, and once it is cooled, the bread is ready to be eaten as well. So glucose is basically converted to ethanol and carbon dioxide, and this carbon dioxide produced makes the bread dough rise. So how does this anaerobic respiration in yeast basically takes place? Yeast can respire anaerobically without oxygen, breaking down glucose in the absence of oxygen to produce ethanol and carbon dioxide. We call this process what? As you just mentioned previously, fermentation, which is very economically important in the manufacture of bread, where the production of carbon dioxide makes the dough rise, and ethanol is a type of alcohol as well. Now you can also investigate the effect of temperature on yeast fermentation, and you can see how it affects as well. Equation you already know, that glucose converts to alcohol and carbon dioxide, but how can we investigate? This is very important according to your paper number 2. हमने देखना है the effect of temperature on the rate of fermentation. You need boiling tubes, capillary tube, bung, yeast, sugar, oil, stopwatch, water bath, and lime water. Method क्या? You are going to mix the yeast with sugar solution in a boiling tube, and the sugar solution provides the yeast with glucose for anaerobic respiration. Carefully add a layer of oil on top of the solution. Why? prevent air. Prevent oxygen from reacting. ताकि हम तो anaerobic करें ना, वरना तो aerobic हो जाएगी. Also use a capillary tube. Connect this with a boiling tube with another boiling tube that is filled with lime water. Lime water क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो क्लाउड वाटर बन जाएगा, वो क्लाउडी बन जाएगा Exactly. तब वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को टेस्ट करता है. Place the जी boiling tube with yeast and sugar solution into a water bath at a set temperature and count the number of bubbles produced in a fixed time, for example 2 minutes. अब यही आप एक्सपेरिमेंट 2 टेम्परेचर्स पे यूज कर लो, और दोनों में आप बबल्स काउंट करते जाओ एग्जैक्ट इन 2 मिनट पीरियड. दोनों टेम्परेचर्स पे, एक आप टेम्परेचर कर लो 60 और एक कर लो आप 40. दोनों में देखो कितने कितने बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 2-2 मिनट में. जहां पे ज्यादा होंगे
आप वो टेम्परेचर देखो, जहाँ पे कम हो गया वो टेम्परेचर देखो, रिलेशन देख लो कि यार टेम्परेचर बढ़ाने से बबल ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। यू कैन सी दैट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ बबल्स। लाइम वाटर आपको सिर्फ ये बताएगा दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट और नॉट, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव रिजल्ट दैट इज गोइंग टू शो यू। You can compare the results at different temperatures to find out which temperature yeast respires the fastest. And the higher the temperature, the more bubbles of carbon dioxide should be produced at higher temperatures, which will be closer to the optimum temperature of enzymes in yeast, increasing enzyme activity. As respiration is an enzyme controlled reaction, enzyme activity increases and the rate of anaerobic respiration will increase. If the temperature is too high beyond the optimum temperature, enzymes will denature. ज्यादा भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा देना, वरना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन स्लो होके एंड पे रुकी जाएगी, क्योंकि यीस्ट के पास भी तो अपने एंजाइम्स हैं जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है। यू डोंट वांट टू किल दोज यीस्ट एंजाइम्स, वरना रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू कंप्लीट। सो व्हाट आर यू चेंजिंग इन दिस इन्वेस्टिगेशन? टेम्परेचर। स्पीशीज ऑफ यीस्ट हमेशा सेम होनी चाहिए जो आप यूज कर रहे हो। रिपीट द इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। मेजरमेंट्स क्या कर रहे हो आप? द नंबर ऑफ बबल्स, और कितने टाइम में? 2 मिनट्स में। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू कंट्रोल? कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, पीएच ऑफ शुगर सोल्यूशन, और जितना अमाउंट ऑफ यीस्ट आपने ऐड किया है। दिस इज गोइंग टू मेक यू अ 6 मार्क एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर। और आपने यही वाला सीक्वेंस यूज करना है व्हेन यू आर राइटिंग डाउन द इन्वेस्टिगेशन इन पेपर नंबर 2। समझ आ गई? जी। How is bacteria used in food production? Microorganisms can be used by humans to produce foods and other useful substances, as well as fungi. Yeast used to make bread. Bacteria are also used in production of certain foods, जैसे कि they are used to make yogurt. Milk to yogurt आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो आप बैक्टीरिया से कर रहे हो, एंड प्लस दे आर ऑल्सो यूजफुल एक और तरीके से, क्योंकि बैक्टीरिया से रिप्रोड्यूस ज्यादा, इससे ज्यादा तेज रिप्रोडक्शन किसी की नहीं होती जितनी बैक्टीरिया होती। इट इज द फास्टेस्ट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस रैपिडली, meaning that the amount of chemicals they can produce, they also rapidly increase because they divide fast as well. Yogurt is made in a process that relies on the presence of a bacterium which is called as lactobacillus. First, all equipment is sterilized to kill other unwanted bacteria and to prevent any type of chemical contamination. The milk is pasteurized, which means it is heated in 85 to 95 degrees Celsius to kill other unwanted bacteria. And this contamination, अगर आप नहीं करोगे, if you don't प्रिवेंट दिस कंटेमिनेशन, वो आपकी योगर्ट प्रोडक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है और आपका योगर्ट का जो टेस्ट आता है उसको भी खट्टा या खराब कर सकता है। सो द मिल्क इज देन कूल्ड टू 40 to 45 डिग्री सेल्सियस एंड देन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज एडेड। पेस्चराइजेशन आसान अल्फाज में क्या है? बॉइलिंग, दूध बॉयल करना, दूध उबालना। द मिक्सचर इज देन इंक्यूबेटेड एट दिस टेम्परेचर फॉर सेवरल आवर्स, जो आप लैक्टोबैसिलस डाल देते हो ताकि वो मिल्क की प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके और उनको लैक्टोज में कन्वर्ट कर सके इन द मिल्क। गॉट इट? जी। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड होते हैं जो दही को, योगर्ट को एक सावर टेस्ट देते हैं। द एसिडिटी इंक्रीजेस द सावरनेस एंड थिकन्स द मिल्क टू फॉर्म योगर्ट। This lowering of pH also helps to prevent the growth of other microorganisms that may be harmful, so it also acts as a preservative. This means the yogurt can be kept for a longer time compared to fresh milk, and the yogurt is then stirred and cooled to 5 degrees Celsius to halt the action of lactobacillus bacteria. Flavorings, colorants, and fruits may also be adding to, make those frozen या fruity या flavored yogurts जो आप बनाना चाह रहे हो। Fermenters क्या होते हैं? Can you tell me any idea? वो थोड़े कंटेनर्स होते हैं, उसमें फर्मेंटेशन टेक प्लेस, मतलब कोई कंट्रोल्ड Exactly. एनवायरनमेंट आपका है। Fermenters are the containers used to grow and culture these microorganisms like bacteria and fungi in very large amounts. These can also be then used for brewing beer, making yogurt, mycoprotein, and other processes which are not involving food, like producing genetically modified bacteria and molds that produce antibiotics such as penicillin as well. The advantage of a fermenter is again कि आप उसकी बहुत सी conditions को control कर सकते हो for that particular type of microorganism, and this labeling is very very important that I am going to give you as a question right now as well. और इसके questions important आते हैं, जैसे water jacket का रोल क्या है और steering paddles का क्या रोल है। इन दो का सवाल जरूर आता है। why, what is the purpose of water jacket and what is the purpose of कूलिंग का होता steering है। paddles? Exactly.
Aseptic precautions लेने चाहिए that you should always clean it with steam to kill all microorganisms and to prevent contamination. Nutrients are always needed for use in respiration. Optimum temperature आप probes के through और water jacket के through maintain करते हो ताकि you can provide a good enzyme activity and prevent the denaturation. Optimum pH is also checked by a probe. Probe also maintains temperature and probe also maintains the pH again ताकि enzyme सही काम करे. Oxygen is also needed for aerobic respiration to take place. And agitation क्या होता है? Steering pedals mix हो ताकि हर microorganism को equal amount of nutrient oxygen evenly distribute हो जाए throughout the fermenter. Is it clear? जी. Good. What is fish farming? फिश फार्मिंग तो होता है आप ब्रीड करते हैं फिश, मतलब वो बड़े कंटेनर्स में, बड़े बड़े वो स्विमिंग पूल की तरह बनते हैं. Exactly. अभी इसको देखते हैं. First let's watch a video on इधर ये आपका yeast and bread. इसको देख लेते हैं. Let's now talk about microorganisms and their role in food production. Microorganisms are living organisms that can only be seen with the help of a microscope. They can cause serious disease in humans, or they can be harnessed and used for our benefit. Microorganisms can be used in food production. We call this process biotechnology. There are two examples you need to know about in real detail. One is how yeast is used to make bread, and the other one is how bacteria are used to produce yogurt. Now, many of the products produced using microorganisms rely on a microorganism carrying out a process called fermentation, which we've already discussed in the respiration video, which you can watch again if you need to recap on that. Fermentation is how a microorganism obtains its energy with no oxygen. It does this by converting certain substances, usually sugars, and making waste products, which we like. We want the waste products. That's the thing that we want from the microorganisms. We want the waste products that they produce when they do fermentation. So for example, when we look at bread, which is made using the microorganism yeast, the yeast do anaerobic respiration and they release ethyl and carbon dioxide. It is the carbon dioxide that we want because what it does is it forms little bubbles which causes the dough to rise. And then when you cook the bread, the ethanol is evaporated and the yeast die and you're left with this nice spongy texture that you get from bread. In detail, this is the way the process would work. First of all, you've got to make a dough, which you do by combining yeast with flour, water and probably some sugar. The dough is then kneaded to mix all the ingredients together and then left somewhere warm. The enzymes in the yeast break down the flour to release the sugars. You need the sugars for anaerobic respiration. They do aerobic respiration first, but the oxygen soon runs out and they very quickly switch to anaerobic respiration, fermentation, and they start producing all this CO2 and this ethanol. And if you leave the bread for a few hours, it's what we call proving, then the dough will start to rise and rise and rise as the CO2 gets released and gets trapped inside the dough. And it can get to sort of 4 or 5 times its volume from where it started. Then you bake that dough in a hot oven, the yeast are killed, the ethanol is evaporated, and you're left with your bread. अच्छा जी, ये आपका हो गया yeast और bread का. And now let's talk about the yogurt making as well. Insane secret. On my way home from a 12-hour shift, I saw an old Let's now talk about microorganisms and their role in food production. Microorganisms are living organisms that can only be seen with the help of a microscope. They can cause serious disease in humans, or they can be harnessed and used for our benefit. Microorganisms can be used in food production. We call this process biotechnology. There are two examples you need to know about in real detail. One is how yeast is used to make bread, and the other one is how bacteria are used to produce yogurt. The basic idea behind making yogurt is that you add a bacteria called lactobacillus to milk.
They use this lactose sugar in the milk for fermentation. They produce lactic acid as a waste product, which is what gives the yogurt its sour taste. So let's go through the main stages of yogurt production. First, you've got sterilization. It's very important that you sterilize all your equipment you're going to use to make yogurt with bleach or steam, because the last thing you want to do is breed unwanted harmful bacteria. So you make sure everything is sterile first. You then want to pasteurize some milk. This heats milk up to 72 degrees 15 seconds and it cools it rapidly down. That's what pasteurization is. And the reason you do that is to also kill any bacteria in the milk. We don't want any bacteria in there. The only bacteria that what we want are the ones that we then add, which are the lactobacillus. So we add those in now and we incubate this pasteurized milk with the bacteria between 37 and 44 degrees C for about 3 to 6 hours. During this process, the fermentation will occur. The bacteria will convert the lactose to lactic acid. The pH drops because of the lactic acid being formed, and this makes the milk then go all solid, and that's how you get the solid formed yogurt. When you then cool it all down, you get a nice thick yogurt product, still with live bacteria in it usually, and that kind of slightly tangy taste from the lactic acid. You can add fruits or flavors at that point to get your final yogurt product. All right, are both the processes clear? जी. Good. Check. Now, why do you think fish farming is done? Because it's easier Mm-hmm. rather than going out fishing in the ocean. Okay. Ben, most More fish are still effective. caught in the wild, open ocean, fresh river waters, and lakes. However, overfishing has led to dramatic declines in many fish populations, and fish farms are now ways of raising large numbers of fish in a small space to provide food and protein for humans. This has several advantages over the wild caught fish, including the ability to selectively breed fish to ensure high quality, fast growing fish, the ability to protect against predators as well. अब आप देखो जब आप फिश फार्मिंग कर रहे हो आप कितनी चीजें प्रिवेंट भी कर रहे हो फिश को ब्रीडिंग कंडीशंस दे रहे हो हाई क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है प्रिडेशन से बच रही है यू कैन कंट्रोल द वाटर क्वालिटी द pollutants as well and you can control their feeding to ensure rapid growth as well. Large numbers of fish are kept in freshwater seawater enclosures and they are carefully monitored and controlled in many different ways so you can ensure high yields of healthy fish. For example, control and maintenance of water quality, control of intraspecific predation, control of interspecific predation, control of diseases, control and removal of waste products such as mercury, the control of quality and frequency of breeding and the use of selective breeding आप कर सकते हो. Water quality आप कैसे maintain करोगे? Can you read this out? Water is filtered to remove waste and harmful bacteria to prevent diseases. Water is also cleaned to maintain high levels of oxygen and aerobic respiration. Good. And how is intraspecific predation controlled? Read it out. Intraspecific predation within the same species of fish are separated by size and age so that they eat each other or fight. Good. Okay. How is interspecific predation controlled? Predation between different species of fishes are separated by fences, nets, and tanks to prevent fighting. Good. Control of disease. Antibiotics are given to fish to prevent disease, which might otherwise spread quickly due to their close confined, increasing the chance of survival. They are also kept in small numbers to minimize the spread of diseases. Good. Okay, जी. How is waste products removed? Water can be filtered to remove waste products such as feces or sewage. Fences, nets, and tanks are cleaned or located of fish can be changed to ensure clean water. Good. Okay. Quality and frequency of feeding. Fish are fed food that is high in nutrients to ensure fast growth. They are fed frequently but in small amounts, so they do not overeat or start eating each other. Use of selective breeding.
Fish are separated by gender so that selective breeding can be used by farmers to only allow fish with the desired characteristics to reproduce. This ensures that the stock of fish is fast growing and the genes get passed on much more frequently. Good. And that is all for your chapter of food production. Got it? जी